जिंदगी तो हम सभी को मिली है, लेकिन ये इंडिविजुअली हम सब पे डिपेंड करता है कि हम उसे जीते कैसे हैं। बिन मकसद, बिन मतलब, या फिर साइशा यानी कि फुल ऑफ मीनिंग बन के। और आज की हमारी जो खास मेहमान है वो इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। रीबॉर्न एट द एज ऑफ 39, ये जो खास शख्सियत आज हमारे साथ है, ये मिस यूनिवर्स पेजेंट का जो 70th एडिशन है उसमें इन्होंने जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है उनका फिनाले गाउन डिजाइन किया है। तो इस जर्नी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। मैं इस इंटरव्यू के लिए खासी एक्साइटेड हूं, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Saisha, a warm welcome to you on Punjab Kesari Over the Times. Hello, hi Nidhi. It's really good to meet you. Yes, same here. Pleasure is all mine. ओके, आई वॉन्ट टू नो दैट ये जो पेजेंट होता है मिस यूनिवर्स का, ये ऐसा एक पेजेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है, दुनिया भर की नजरें वेदर यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री और नॉट उस पर टिकी होती है। सो सिंस आप इसका हिस्सा है, फिनाले गाउन आपने डिजाइन किया है, व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस एट दिस मोमेंट? मैंने पहले भी गाउन्स डिजाइन किए हैं करेक्ट। फॉर नेहल चुदासमा who went for Miss Universe, for Roshmita, for a lot of girls in the past. तो हर साल एक अलग एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि हर साल एक नई लड़की रहती है और नए सपने रहते हैं, नई 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 डर नया डर रहता है। बट विथ हरनाज आई कैन से एक स्पेशल बात ये है कि वो दिल की इतनी अच्छी है। शी इज सच अ लवली गर्ल बाय हार्ट that I wanted to push myself as well. तो yes, eventually एक गाउन यूज हुआ, लेकिन हमने 3 गाउन बनाए थे जिसमें से एक फाइनली सिलेक्ट हुआ, and I from my side wanted to make 3 gowns and then choose one for her because she really deserves it. Now the other girls are going to be upset that I made 3 for her and 1 for them, but her Naj is special. So I'm very excited. I'm very nervous जैसे मैं फैशन वीक में रहती हूँ वैसे ही, जिपर ना टूटे, गिरे ना कोई, श्योर है। बट एज फार एज द लुक इज कंसर्न्ड, Harnaz is going to rock the look for sure. Fingers crossed to that, because the whole nation would be looking out for her. But tell me one thing, मैं हरनाज का कई इंटरव्यू पढ़ रही थी एंड शी सेड दैट ट्रायल्स एंड फिटिंग्स जो हैं वो काफी बार हुए हैं, रिहर्सल्स हुए हैं। सो एज अ डिजाइनर, आपके पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं, डिड यू हैड दिस पर्टिकुलर रूटीन और regime for her where eat this, do not eat this, भाई इतने में ही तुम्हें फिट होना है, or something like that? I honestly come only in terms of, मतलब मेरा काम सिर्फ उसके wardrobe तक है. Okay. As far as this specific health training is concerned, that's mainly what the Times Group does. But Harnaz has been so focused हाँ. that उसने खुद से ही काफी मेहनत ली है. So even though the others were giving their inputs, she herself was so focused and prepared that, or time bhi kam tha. She just had like 15-20 days to prepare. Or I remember when I met her for the first time, I was shocked with the way she is so well behaved and well mannered. और वो एक refreshing चीज है for me to see in a Miss India. Not that the others weren't, but Harnaz was really so well mannered and so well behaved, and that was very refreshing. So I knew that even the others. So as you mentioned, whether her fitness is concerned, whether her hairstyle is concerned, I knew that there'll be a difference. She was quite raw when I met her. वो raw थी. और जब finally evening gown की fitting का time आया, which was towards the end, she was changed. Okay. मतलब उस लड़की ने इतनी मेहनत डाली थी कि hair, makeup, everything was done by her, and she looked like a winner. So all I can say is she's a great learner, which is why I know that her body and everything is going to be in kick-ass condition. Yes, yes. Okay, so Voot पे ये stream होगा live on the 13th of December, which then obviously हम जितनी attires हरनाज पहनेंगी during that entire event हम देखेंगे. But obviously एक excitement level जो होता है वो बढ़ जाता है, considering the level of the pageant that there is. And also like she said ना, India हमारा देश जो है कल्चरली बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच है, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग सब देखें उन्होंने किस तरह के एंसेंबल कास्ट ये ड्रेसेस पहने हैं. तो थोड़ा स्नीक पीक अगर आप दे पाए इनटू व्हाट दिस इवनिंग गाउन इज अबाउट, द ग्रैंड फिनाले. Obviously मैं ज्यादा तो बता नहीं सकता
सकती क्योंकि फिर वो सरप्राइज एलिमेंट चला थोड़ा जाता है थोड़ा when you थोड़ा, see the gown. मे बी अ टीजर. It's a silver champagne gown that I can tell, and it's obviously taken inspiration from India, from Fulkari, because she's from Punjab. Yes. But I've tried to modernize it. I've tried to make it as modern as I can. तो yes, जो इंस्पिरेशन है वो मुझे और हरनाज को पता है, बट शायद दुनिया सोचेगी कि यार इसमें फुलकारी कहाँ पे, पर हमको पता है कि हमने वहां से यहाँ से वहां से कैसे फाइनली दैट गाउन केम अक्रॉस. Okay. It's very delicate. It's an extremely delicate gown. Or as Saisha, this is my first gown for the Miss Universe pageant as well. You will be able to see the stark difference जब मैंने पहले Miss Universe के लिए gowns बनाए थे और जो ये वाला. Yes, and this, you have automatically brought me to my next question here. Reborn at the age of 39. Now, I want to know, okay, now when Saisha designed the dress, and now when you are designing, ever since, perspective change हुआ है? And if so, how? 180 हो गया है. I can tell you that. Really? See, my creative force is always going to be there. Hmm. My aesthetic has changed. My idea of what is comfortable has changed. और पहले स्वप्निल बस डिजाइन करता था, कुछ नहीं सोच के बस डिजाइन करता था. साइशा सोच के डिजाइन करती है. ये आउटफिट मैं कहाँ पहन रही हूँ, ये आउटफिट अगर मैं यहाँ पहन रही हूँ तो इसकी नेक इतनी डीप होगी, इस पे स्लीव्स होंगे, इस पे ये कलर ही चलेंगे. तो ये जो वेरिएबिलिटी एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि भी मुझे खुद को पहनने के लिए कंफ्यूजन हो जाती है. और मेरे आधे जो कपड़े मैंने डिजाइन किया, आई एम लाइक आई कांट वेयर देम, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर वुमेन टू वेयर. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट विल वर्क ऑन अ वुमन्स बॉडी हैज बिकम अ लॉट शार्पर. Correct. So, I mean, if it won't be wrong to say, if Swapnil was designing amazing clothes, Saisha has given a soul to them. Oh, definitely. I think it's just going to get better for me now, from now on. So fingers crossed to that, because we've loved your work then, and definitely we're going to love your work now also. But tell me something, Saisha. बहुत सारे A-listers के लिए, design किए आपने कपड़े, and then this whole pageant. देखिए, हम लोग जब ऑडियंस होती है तो हमें फिल्म भी वो पर्दे में 3 घंटे की दिखती है, उसके पीछे की प्रिपरेशन नहीं पता होता. When we will see the pageant on Voot being live streamed, तो भी हमें वो pageant दिखेगा. What is the hard work behind all of it? This question is in 2 parts. One is this hard work part, and the other is ये दोनों process कितने different है, designing for films and then designing for a pageant like this, or is it same? सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म्स के लिए 2 दिन मिलते हैं, कभी 3 दिन मिलते हैं, नसीब अच्छा हो तो 4 दिन मिलते हैं. For Harnaz, we had a good 15 days to prepare. Apart from that, freedom obviously ज्यादा है pageants में, because it's just what the organization has a vision of and what Harnaz की vision है, उसको मिला के then we make a gown. But whereas movies are concerned, एक बहुत definite direction रहती है कि this is what we want and we can't go beyond that. So in that aspect, that's the major difference. But predominantly is the time. जो मेहनत हरनाज के लिए obviously 15 दिन में गई है, वो for a film हमको 2 दिन में डालनी पड़ती है. Okay. So that's the major difference, yeah. Okay. बाकी hard work and जो thought process है वो दोनों में same लगता है. ये ना जो hard work और thought process for a pageant 1 महीना मिलता है डालने के लिए, यहाँ पे 1 रात में या 2 रातों में सोच के डालनी पड़ती है. Literally on your feet thinking जिसको कहते हैं वो करनी पड़ेगी. Yeah. It gets very hectic and very stressful. But by God's grace, I've never had any problems on set, which is why there's so much loyalty with my stylists and my actors. Okay, now I want to ask this question, that you're one of the first to break grounds with, redefining your identity. I want to know, why now? What is that final push that made you decide ke abhi nahi to kab? I think for everyone, the pandemic was a point where, their fears were in front of them and they had to face them. You could not go anywhere. Yes. While people were dying, log mar rahe the, itni sadness thi, itna, everyone was really going through such a bad time. For me, the pandemic actually turned out to be a silver lining. That mere fears jo samne aaye, I had to face them, and I faced them, and here I am. And
I feel it's one of the best decisions I could have ever made, because not only for myself, but I'm seeing what is done for others. And I think it's like the best decision ever. Correct. But as you said that, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि this is also an inspiration for others who may want to follow in the footsteps. थोड़ा कहीं hesitation और हिचक होती है. Obviously, आपकी journey भी आसान तो रही नहीं होगी, right? So you must have faced a lot of challenges. If you could share some, so that the others who may be listening to this interview and watching this interview, कहीं अभी भी closet में हैं, तो थोड़ा खुलकर बाहर आ सके. I think what's very important, जो बहुत जरूरी चीज है, for people to be empathetic. Not everyone has the courage to come out. Yeah. Some people can't come out. Some people take their time to come out. और हमें उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग दिखाना जरूरी है, बिकॉज सबकी स्टोरी अलग है. You can't expect the reaction that I got, you will get, or someone else will get. तो वो, for example, the way my parents accepted me, the way my friends accepted me, शायद कोई और जिसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है, they know their parents might throw them out, their friends might on their friendship. So I think what's important is to be empathetic to everyone. सबसे ये एक्सपेक्ट करना कि हाँ अभी you come out, अभी you live honestly is a bit unfair, because सबकी स्टोरी अलग है. So that is one thing I hope people learn from me. Secondly, there is no age for this. Right, you can come out at 18, you can come out at 32, you can come out at 60. Eventually, you need to accept your reality, because तभी तुम्हें पता चलेगा कि life is freaking so beautiful. Only then you will come to that. Correct. And also, I think it has to be from within, without force. And when you have to be happy with whatever you accept. Yes. दूसरे तो बाद में accept करें, पहले हमें खुद को accept करना. और वो खुद को accept करना ही is the time consuming part. For the younger generation, obviously, because वो aware है, internet है, तो उनके लिए ये acceptance अभी काफी easy है. But the people who are from my generation, or 10 generations before me, 3 generations before me, for them to accept also takes a lot of time. And it's very, I'm so glad you mentioned it, because therapy लेना इतनी जरूरी है ये चीज के only then you'll end up accepting it. करेक्ट. बट ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साइशा मेरे हिसाब से ये भी है कि जनरली भी लाइफ में हम एक तो ना लोगों ने एक पैटर्न, एक लाइफ बनाई हुई है, एक रास्ता बनाया है, इसी में चलना है, एंड पीढ़ियों से लोग चल रहे हैं. जहां कोई इंसान हटकर कुछ करता है तो चैलेंजेस फेस करता है, राइट? नाउ हियर इन व्हाट यू डिड एंड यू हैड द करेज टू एक्चुअली अचीव इट, फैमिली का, लव्ड वंस का कितना और कैसा सपोर्ट रहा? जैसे मैंने कहा, I am truly blessed. I am truly blessed, because my parents are conservative. The Maharashtrians who are, मेरे dad 4th standard fail है, मेरी mom 10th fail है, but they've shown the highest level of progressiveness. Though they've not traveled, दुनिया घूमे नहीं है, but उन्होंने जिस progressiveness दिखाई है is quite like, I truly feel कि कोई है जो मुझे देख रहा है या देख रही है पक्का. My friends have been supportive since day one. They've truly been my trailblazers, because क्या होता है ना, when you are in such a position physically, to be comfortable in public places and all of that becomes very difficult. But my friends have always been there with me to make sure that I am comfortable in public places. So touch wood, blessed. Correct. And I think people around you have, Saisha, redefined when people say love. No, love is blind, love does not question. So it's just love, जिसमें आप जैसा इंसान है उसको वैसा ही accept कर रहे हैं और उसकी खुशी में खुशी ढूंढ रहे हैं. So I'm so happy and for the fact that you're blessed in that way. But जाते जाते what is your message to people who are listening to us and maybe एक inspiration आपसे देना चाहते हैं? First and foremost, to be patient. You need to be patient in life in general. ज़्यादा घाई करेंगे, ज़्यादा restless रहेंगे, तो you'll make up hasty decisions. And secondly, never give up. Okay, all right. And I think यही आपकी life journey भी रही है, never give up, which is why you are where you are today. So wishing you all the luck. It was a pleasure talking to you, Saisha, and fingers crossed, because all eyes on 13th are going to be on that pageant, and of course वो gown को मैं भी देखूंगी. I will recall this conversation of ours. Thank you so much for talking to me. Thank you, Nidhi. Bye bye. Take care. Yes. Bye. Bye.